the solar solstice to make it an international yoga day. 7 अगस्त से बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर नॉर्थ अमेरिका के टूर पर होंगे। अपने नए नाटक मेरा वो मतलब नहीं था के साथ जिंदगी की खट्टी मीठी वास्तविकता को दर्शाता ये नाटक अमेरिका में रजिंदर ऑफ स्टार प्रमोशंस प्रस्तुत कर रहे हैं। 14 अगस्त को शिकागो में इस नाटक को साहिल एवं LA टैन बतौर लोकल शो प्रमोटर्स प्रस्तुत करेंगे। बुधवार 17 जून को अनुपम खेर ने मेरा वो मतलब नहीं था का प्रचार करते हुए शिकागो में प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की। मुंबई और सिंगापुर में सोल्ड आउट शोज अपार सफलता मिलने के बाद अनुपम खेर मेरा वो मतलब नहीं था नाटक के साथ नॉर्थ अमेरिका में आ रहे हैं। बॉलीवुड फिल्म्स, थिएटर और टेलीविजन के साथ साथ ब्रिटिश और हॉलीवुड में अपनी अनूठी पहचान बना चुके अनुपम खेर के साथ इस नाटक में कई मजे हुए अभिनेता हैं, जिनमें नीना गुप्ता, राकेश बेदी, सतीश कौशिक, अंजन श्रीवास्तव इत्यादि शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुपम खेर ने मेरा वो मतलब नहीं था की कहानी की चर्चा की। In our lives, men especially constantly keep saying मेरा वो मतलब नहीं था. I don't think women say that so often, but men are always escaping situations and sort of saying that no, that's not what I meant. Arey, why don't you say what you meant? So I heard the play and I loved the play. It's about two people who in their early 20s, around 23, 24, both love each other and want to get married. But on the day of the marriage, somehow the bridegroom does not land up. And no, that is not usual. After 35 years, this lady has decided to leave the country, but she wants to come and meet this guy and ask him what happened. She says that मैं नहीं जाना चाहती ये देश छोड़कर और ये सोचकर कि तुम उस तरह के इंसान थे, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भूख थी कि तुम वो नहीं थे जो तुमने किया. And then the play goes on to reveal what happened in their lives. हम दोनों ने मिलकर कितने दिनों को शामों में और शामों को रातों में बदल दिया और कितनी रातों को सुबह में तब्दील करके सुलगते आफ्ताब को लाल किले की भूख से बदल दिया और कितनी बार एक दूसरे का हाथ थामे उसी सूरज को चांदनी चौक के बाद रात के पार में डूबते देखा. First time in Indian theatre, we are using the technique of cinema at the same time. So we have flashbacks which are on screen. So flashbacks will be, and our flashbacks are directed by a very dear friend of mine, a very fine director, Neeraj Pandey, who made Wednesday, Special Chappis and Baby. So he has directed the flashbacks, and the play does not only have me and Neena, it also has Rakesh Bedi, and it also has Satish Kaushik, Himani Shivpuri, Anjan Shrivastava, but they appear in the flashback. They are the characters who are in the flashback. So I think people, whether they live in India or they live outside India, we always have somewhere or the other had a crush in our lives, and then the life moved on. So this is a play about relationships. This is a play about hope. This is a play about belonging. It makes you laugh. It makes you cry. We've had in the last 2 months 12 very successful shows in India, and the best part about the play has been that we have not yet opened the booking window once. It gets sold out on the day it's announced. Even in Singapore, which was our first international show, we had a sold out show. Very good. It is beautiful. It is natural, and Anupam ji is an ensconced actor. The best part about this play is so positive. It gives me a feeling that you have to clarify your doubts. Never let them be in your heart. You know, it had made me cry, had made me smile. Beautiful. It's really nice. I always do plays where people see their lives on stage performed by others. हम सबकी जिंदगी के कहीं ना कुछ अंश जो हैं वो हमको बाकी जो किरदार स्टेज पर हैं, चाहे वो मैं हूँ या नीना गुप्ता है, उनको हम उनमें अपनी जिंदगी ढूंढते हैं. It has some amazing dialogues. One of my favorite dialogue is, I think, people who live abroad, Indians who live abroad or other nationalities
याद करने पर बीता हुआ सुख भी दुख ही देता है. So nostalgia is pain. वक्त तो चला है, अभी